गुड मॉर्निंग दोस्तों। बहुत अच्छा मौसम है। आई हैव कम बैक फ्रॉम कज़ाकिस्तान एंड मैं यहाँ यूएई के दुबई में अपनी स्टडी में बैठा हूँ एंड आई थॉट आई टॉक टू यू अबाउट व्हाट इज़ गोइंग टू हैपन इन 2024। सबसे पहले लेट मी विश ऑल द वॉचिंग दिस वीडियो ए हैप्पी न्यू ईयर। बहुत अच्छा साल आपके लिए गुजरेगा, आई एम श्योर अबाउट इट, एंड माई बेस्ट विशेस आर विद यू ऑल। जेंटलमैन, अभी ये बात तो अच्छी है, बट व्हाट इज़ लाइकली टू हैपन इन 2024 इतनी अच्छी बात नहीं है। सिचुएशन इज़ बहुत ग्रिम, वेरी ग्रिम। और मैं पहले बात करूँगा कुछ इंडियन इलेक्शन के बारे में जो आने वाली है। वी आर गोइंग टू हैव जनरल इलेक्शन दिस ईयर एंड जो हमारा विपक्ष है दे आर होपिंग, जैसे कहते हैं ना, अंग्रेजी में कहावत है, इफ विशेस फॉर हॉर्सेस देन बेगर्स वुड राइड। तो इनकी विशेस ये है कि ये पावर में आ जाएं किस तरीके से, दे कैन थ्रो नरेंद्र मोदी अरेबियन सी के अंदर, पर ऐसा होने वाला नहीं है। एस्ट्रोलॉजिकल इंडिकेशंस भी यही हैं कि नरेंद्र जी बहुत थम्पिंग मेजॉरिटी के साथ जीतेंगे एंड अनफॉर्चुनेटली राहुल गांधी और जो उसके साथी हैं इनको खुद को बे ऑफ बंगाल में छाल पानी पड़ेगी। ये एक मेटाफॉर है, ये सच में जाके छाल नहीं मारेंगे, पर मतलब ये है कि दे विल नॉट बी एबल टू हैव एनी लेवरेज एज फार एज द पावर ऑफ द कंट्री इज कंसर्न्ड। और उसके फॉल्ट बहुत सारे हैं, बेसिकली बिकॉज जो विपक्ष है इट हैज़ नॉट प्लेड द पार्ट ऑफ एन ऑपोजिशन। पॉलिटिक्स में कोई हेट्रेड नहीं होती, पर कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी हेट्रेड रखते हैं अगेंस्ट बीजेपी एंड नरेंद्र मोदी। देखिए, बीजेपी के साथ आप एग्री करिए या नहीं करिए, दैट्स अ डिफरेंट इशू, बट दे आर ऑल्सो ए नेशनल पार्टी एंड एवरीथिंग शुड हैव बीन डन इन ए प्रॉपर मैनर, बजाय कि आप गालियाँ देते रहें। कोई कहे जी ये चमार है, ये कोई कहे ये चाय वाला है। यू नो, दीज आर थिंग्स विच आर नॉट डन। एंड व्हाट डज दिस शो? इट शोज अ डेस्परेशन इन द ऑपोजिशन। एंड ऑपोजिशन ने एक कॉन्क्लेव बनाया है, दे हैव ऑल गॉट टुगेदर, दे थिंक दे आर गोइंग टू बी टुगेदर, बट दे आर फाइटिंग विद ईच अदर। नीतीश कुमार अपने रास्ते में जाना चाह रहा है एंड ही मस्ट बी द मोस्ट सैडेस्ट मैन, बिकॉज इसने क्यों छोड़ा था बीजेपी को? इसने छोड़ा था कि मैं प्राइम मिनिस्टर फेस बनूंगा एंड हो सके आई विल बी प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। देखिए, आप ड्रीम कर सकते हैं। हैरल्ड रॉबिन्स ने किताब लिखी थी, व्हेन ड्रीम्स डाई फर्स्ट, एंड अनफॉर्चुनेटली ये जो ड्रीम्स हैं नीतीश कुमार के, ये ख़त्म हो चुके हैं। ही हैज़ गॉट नो चांस ऑफ एवर बीइंग द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया एंड आई विल बी रियली सरप्राइज्ड इफ ही इवन बिकम्स द चीफ मिनिस्टर आफ्टर दिस इलेक्शन of Bihar state, because he has burnt all his boats. He doesn't know what to do, and Punjabis कहते हैं ना, guachi gang. He's like that, moving around here and there and just creating nonsense, you know. बाकी सब लीडर आप देख लीजिए, जो सदर्न लीडर्स हैं, पर्टिकुलरली तमिलनाडु के, इनको सिविलिटी नहीं आती। दे डोंट नो हाउ टू बी सिविल एंड दे टॉक ऑल नॉनसेंस। मैं यहाँ रिपीट नहीं करूँगा क्या क्या बुरी बातें उन्होंने कही हैं, बिकॉज पीपल हु टॉक सच थिंग्स शोज एक ही चीज़ कि दे आर हैविंग ए इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स। और मैं तमिलनाडु में सर्व किया है, मैं ये बता सकता हूँ कि जो तमिल लड़कियाँ हैं, मोस्ट ऑफ देम वांट टू मैरी नॉर्थ इंडियंस बिकॉज दे आर फेयर, हैंडसम एंड स्ट्रॉन्ग। ये कोई रिफ्लेक्शन नहीं है साउथ इंडियन मैन के ऊपर, बट दिस इज़ द फैक्ट ऑफ लाइफ। I served in Tamil Nadu. I know the place very well. They are wonderful people, but this is a fact which cannot be hidden away. So all these things is there. The opposition doesn't know what it's doing. They are still carrying on with a Nigerian leader, you know, like Sharad Pawar. I think he is 83 or something like that. And best of luck to him. But he cannot give leadership. He is not the leader which India needs. And you can take Mamata Banerjee. I think she's a regional leader confined to some districts in Bengal, that's about all.
and it will be a surprise to me in case she can win more than 15 seats in the coming parliamentary election. So you look at the opposition, the cupboard is bare. Uddhav Thackeray, मुझे तो बहुत अफसोस आता है इस आदमी के ऊपर. आई फील वेरी सैड फॉर हिम कि इनके जो पिताजी थे कितने बड़े हिंदुस्तान के चैंपियन थे, एंड ये आदमी ने जाके आदमी ला लिया राहुल गांधी के साथ, जो दिन रात गाली गलोच करता है एक हिंदुस्तान के बहुत बड़े स्टालवार्ड के अगेंस्ट 20 सवार कर, एंड ये आदमी उसके साथ जाके चाय पी के मस्ती मार रहा है. यू कैन जस्ट इमेजिन व्हाट सॉर्ट ऑफ मैन ही इज, just for the sake of being the chief minister. And he became chief minister for 2 years. For what for? क्या gain किया उसने? He lost the national respect. He is nowhere now, and in politics he has written his obituary. I don't want to take blame of any other leaders. Most of them are opposition leaders there. See, there is, even in the BJP, there is a paucity of leadership. Because Modi के अलावा और कोई लीडर है ही नहीं वहाँ. That's also a fact. And all the other leaders like Rajnath Singh or all of them are just ciphers, and they cannot win an election on their own. It will be a big problem if any of them try to win an election or lead the BJP forward. But Narendra Modi is himself 100+ man, and he is a man with a vision, no doubt about it. Though I must say, he is not the erudite man which we think of, a man who has studied in a proper university or school and gone up. He is not that sort of a man. He's an egalitarian, a man who's risen from the ranks, and obviously his thinking is also of that type, But he is the best man we have got to lead India forward. And he's done a lot in the last 9 years to show that India can do so many things. So gentlemen, जहाँ तक इलेक्शन का सवाल है, एस्ट्रोलॉजिकली भी क्लियर है कि बीजेपी इज़ गोइंग टू विन ए वेरी बिग मेजॉरिटी. और ये सब जो आदमी हैं, कांग्रेस और वामपंथी दलों के बारे में तो कोई बात ही नहीं करनी चाहिए. आई मीन द कम्युनिस्ट इन इंडिया आर नॉट नेशनलिस्ट, दे आर ट्रेटर्स. दैट्स माई वेरी व्यू. एंड इफ यू see my earlier videos, you will realize that as far as the Russian Revolution is concerned, it was headed by the Bolsheviks, the communists. उसका रिजल्ट ये हुआ कि द रशियन एम्पायर विच वाज लास्टेड फॉर हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स खत्म हो गई विद इन 2 years. ये तो कंट्रीब्यूशन है कम्युनिज्म का. सो एनीबडी हु सेज दैट these वामपंथी people and communists are nationalists and all that is all bullshit. They nowhere. These people are nowhere. All they know is how to create problems and how to, come in the limelight by making some sensational news. Like, I think one of the leaders of the Communist Party has now said that he will not attend the opening of the Ram Mandir. I mean, this is an extremely silly thing. Many of the opposition leaders are thinking of boycotting the opening of the Ram Mandir. And that is an insult to the Hindu religion and an insult to the god Ram. Ram एक महापुरुष थे, and he is a historical fact, a historical entity. He doesn't belong to the BJP. वो BJP के नहीं है कि वो BJP के मेंबर थे और RSS की परेड करते थे. No, he is the leader of India. He is the god of India, and he is the apostle of India. तो उसको डेनिग्रेट करने बहुत गलत बात है. मेरे ख्याल में ये एक रीज़न होगा. अगर ऑपोजिशन ने बॉयकॉट किया ये ओपनिंग ऑफ राम मंदिर, तो दे विल ऑल गो टू द अरेबियन सी. मेरे ख्याल सब इकट्ठे होकर रस्सी बांध के उसमें चाल मार देंगे. देयर विल बी नो चॉइस फॉर देम, बिकॉज हार जीत तो पॉलिटिक्स में होती है, बट यू हैव टू एक्सेप्ट इट विद ग्रेस. अब जितने भी अब कांग्रेस के लीडर देखिए, वो कितनी वाहियात बातें करते हैं. एब्सोल्युटली स्टूपिड मैन. एंड उनके जो प्रेसिडेंट है खरगे, वो बिल्कुल बकवास करते रहते हैं. आई मीन विच गॉट नो रेलेवेंस. या उनकी खुद की फॉलोइंग जो जीरो, उनको बोलिए कहीं या दिल्ली या यूपी के जगह से कहीं इलेक्शन खड़ा हो जाए तो उनकी ही विल लूज हिज डिपॉजिट. तो ऐसे आदमी को उन्होंने लीडर बना के रखा हुआ है, विच इज़ गॉट नो रेलेवेंस टू एज फार एज द पोलिटिकल सिचुएशन इज कंसर्न. इंडिया में बीजेपी पावर में ज़रूर आएगी, नो डाउट अबाउट इट. पर क्वेश्चन ये है कि विल द बीजेपी एबल टू डिलीवर द गुड्स अगेन. यू सी, मेरा ओपिनियन थोड़ी सी डिफरेंस है. बीजेपी जो है हैज़ टू शेड 2 or 3 थिंग्स फ्रॉम देयर स्किन. सबसे पहले उनको
जो ये हिंदी की इतनी चैम्पियनिंग करते हैं, दैट शुड बी स्टॉप्ड। फील्ड मार्शल करियप्पा जो थे, ही वॉज अ ग्रेट जनरल ऑफ द इंडियन आर्मी, उनकी विल पढ़नी बहुत ज़रूरी है। उन्होंने एक चीज़ कही थी कि लैंग्वेज से कंट्री टूट जाती है, हैंस वी मस्ट हैव ए लैंग्वेज विच इज़ एक्सेप्टेबल टू ऑल इंडियंस, एंड वो लैंग्वेज सिर्फ अंग्रेज़ी है। दैट इज़ द ओनली लैंग्वेज इज़ एक्सेप्टेबल टू तमिलनाडु और टू पंजाब एंड अदर स्टेट्स। बट अनफॉर्चुनेटली द बीजेपी इज़ हैविंग दिस प्रो हिंदी एजेंडा एवरीवेयर। और एक कारण ये भी है कि जितने भी बीजेपी टॉप लीडर्स हैं, जैसे राजनाथ सिंह है, इवन नरेंद्र मोदी और अमित शाह, ये अंग्रेज़ी में फ्लुएंट नहीं है, तो नेचुरली वो तवज्जो ज़्यादा देते हैं हिंदी के ऊपर। बट हिंदी इज़ ए डिविजिव फोर्स, एंड साउथ में हिंदी उनको नहीं चाहिए, तो फेयर इनफ। कल को खुदा ना खास्ता अगर ऐसी बातें चलती रही, देयर कुड बी ए ब्रेकअप ऑल्सो बिटवीन द नॉर्थ एंड द साउथ। आफ्टर ऑल, जो चीज़ हमें लगती थी कभी नहीं होगी, इट हैपेंड इन पाकिस्तान, एंड दे ब्रोक अप ऑन द इशू ऑफ लैंग्वेज, बिकॉज उर्दू वॉज मेड द नेशनल लैंग्वेज ऑफ पाकिस्तान। बंगाली को उन्होंने बाहर फेंक दिया, एंड एट रिजल्ट अल्टीमेटली देयर वाज नो इंटेग्रेशन। सो I think this is one thing on the language issue. The BJP must be very clear what it wants to do. Secondly, if India has to survive, BJP has to do two things which Gandhi failed to do. And if Narendra Modi can do it, he will be greater than Gandhi. But unfortunately, I think he is not in that same mold. First of all, he has to do away with all sorts of reservations based on caste or anything else as far as the country is concerned. The BJP has to do it if India has to move forward, otherwise India will break up. एक स्टडी की थी कुछ साल पहले by the Institute of Strategic Studies चाइना, और उन्होंने अपनी कंक्लूजन दी है। हम उसके साथ एग्री नहीं करते, मैं भी नहीं एग्री करता, पर जो उन्होंने लिखा पढ़ने के लिए तो कोई हार्म नहीं है। They have said that India will break up into a number of countries, only then it can progress, because India is beset by caste and an obscure religion like the Hindus. Hinduism not an obscure religion, it's a wonderful religion. पर उसकी बैड पॉइंट्स जो हैं वो भी हैं, लाइक कास्ट सिस्टम विच डजंट एक्सिस्ट एनीवेयर इन द वर्ल्ड। और किसी भी कंट्री में जहाँ सिलेक्शन ऑफ हाई जॉब्स, एडमिनिस्ट्रेटिव जॉब्स कास्ट के ऊपर होगा, वो कंट्री कभी आगे नहीं चल सकता, बिकॉज कंट्री वही आगे चलेगा जहाँ मेरिटोक्रेसी होगी। अमेरिका आगे क्यों गया? बिकॉज मेरिटोक्रेसी, इवन इंडियंस वहाँ जाते हैं जो दे आर गिवन इक्वल अपॉर्चुनिटी, एंड उन्होंने बहुत सक्सेसफुल काम किया है अमेरिका में। नासा में बहुत से इंडियंस काम कर रहे हैं, एंड यू मस्ट हर्ड द नेम ऑफ डॉक्टर चंद्रशेखर, द एमिनेंट फिजिसिस्ट हु वन द नोबेल प्राइज, एंड he adopted the American citizenship and he was given all honor. So अगर वहाँ भी वो ऐसी कोई लैंग्वेजेस और ये वो बनाया होता तो he would be nowhere. So India has to get rid of the caste system and the caste reservation. Caste system to rid करना is not going to be easy. Gandhi didn't try and he failed. He didn't want to do it also. That's number one. The only man who succeeded in obliterating the caste system is Gautam Buddha. पर बुद्धा की जो बुद्धिज्म इंडिया से गायब हो गई. The basic difference between Buddhism and Hinduism is that Buddhism doesn't believe in caste, while Hinduism believes in caste and Brahmin culture. So वो Hinduism से यहाँ से खत्म हो गए. Brahminism came back to India, जो at one time राजा अशोक जो था, he was the king and he was a Buddhist. Gentlemen, तो ये एक second point है. Third point which he has to do is the linguistic states. एक बात याद रखिए कि इंडिया कभी भी हिस्टोरिकली लिंग्विस्टिक डिवीजन कभी नहीं हुई. सी whenever the Mughals were ruling or the Marathas were ruling, there was no linguistic division. Marathas ruled all sorts of people. You know, they had the Karnatakas, they had the Tamil, the Hindi, everybody was with them, Urdu speaking and all that. And same thing with the Mughals. They were ruling. They were रूलिंग द एंटायर कंट्री, पर उन्होंने कोई डिवीजन नहीं कर रखा था कि ये हिंदी एरिया है, ये फलाना एरिया है, ऑल दैट वाज नॉट डन. सो नेहरू कमिटेड ए बिग ब्लंडर. दैट इज द सैडनेस ऑफ इंडिया कि इंडिया में एक ऐसा लीडर आया हु हैड द लव ऑफ द पीपल बट ही डिड नथिंग. ही जस्ट वेस्टेड हिज टाइम एंड वेंट अवे एंड ही लेफ्ट बिहाइंड इनसरमाउंटेबल प्रॉब्लम्स. सो दैट इज द सेकंड थिंग. थर्ड थिंग विच वी मस्ट डू, मोदी शुड ट्राई and do away with the division on linguistic states.
इफ़ यू रिमेंबर दी विल ऑफ फील्ड मार्शल करियप्पा, मैं फिर उनका जिक्र करता हूँ, वो ग्रेट सोल्जर और इंडियन आर्मी के और नेशनलिस्ट थे। उन्होंने लिखा था कि इंडिया की जो स्टेट्स हैं, ये जो लिंग्विस्टिक स्टेट्स हैं, दे मस्ट बी फिनिश। ही से टेक फॉर रूलर एंड जस्ट लाइक एज वी हैव अवर कमांड्स, डिवाइड द कंट्री इनटू से 5 or 6 portions, north, south, east, west, north India, west India, like that, and do away with the linguistic division. This is leading to vociferous tendencies. अब देखिए महाराष्ट्र में शिवसेना तभी पावर में आई जब महाराष्ट्र बन गया, बिकॉज दे स्टार्टेड चैंपियनिंग द कॉज ऑफ द मराठीज एट द एक्सपेंस ऑफ द अदर्स। जो हार्ड अर्नड आदमी वहाँ काम कर रहा है, आप उसको कहीं चीज़ को भगा दीजिए, यहाँ ये हमारे सन्स ऑफ द सॉइल थ्योरी में नहीं आता। दिस आर ऑल वाहियात बातें, एंड इट्स वेरी सैड दैट दिस थिंग इज कंटिन्यूइंग इन इंडिया। And then we have to open up the country completely. In the sense, the BJP is on the right track, like abolishing Article 370 and also bringing in the Uniform Civil Code. But abhi tak laye nahi hai. 9 years have elapsed and the BJP has not brought in the Uniform Civil Code. Because अगर opposition power में आएगी, you know all these things will go into cold storage और वो status को वापस revert करेंगे. But if India has to move forward, we have to do away with all this crap, you know. And now that somebody cannot go to Kashmir and somebody cannot buy land in Himachal, all that is stopped. You buy land anyway, do anything. And tribals have to be looked after. I agree, tribals have to, but not by this method. You have to educate the tribals, give them free education, let them come up to the level of the other people. And they'll be more happy instead of giving them a dole and then they achieve nothing. Because even now, the scheduled castes have not really prospered in India despite all these reservations, because these are all paper actions, and a few families among the elite of the backward castes have been taking all the benefits, the others get nothing. वो वैसे ही बैठे रहते हैं वहाँ गांव में एक कोने में. So gentlemen, there are so many things which Modi has to do. Secondly, Modi has to get out of the concept of the Durg mentality. Indians क्यों हारे बैटल में? बिकॉज हमें एक दुर्ग मेंटेलिटी आ गई थी कि हम एग्रेसिव नहीं थे. वी वर ऑलवेज सिटिंग एट द बैक एंड वेटिंग फॉर द एनिमी टू एक्ट. नाउ दैट हैज़ टू स्टॉप, एंड आवर रिएक्शन अगेंस्ट चाइना इज प्रिसाइसली दैट. वी आर नॉट एबल टू फेस अप टू चाइना. ये अफसोस की बात है, बिकॉज और मैं आज एक स्टेटमेंट बताता हूँ. बहुत से लोग कहते हैं कि इंडिया चाइना को कैचअप कर लेगा इन ड्यू कोर्स एंड ऑल दैट. आई डोंट थिंक सो. अनलेस कोई अपील हो जाए बहुत बड़ा इंटरनल चाइना में. चाइना की जो इकोनॉमी है 18 ट्रिलियन डॉलर्स, हमारी 3.75, एंड अगर इंडिया 6 से 7% भी करे और चाइना 4% करे, इट विल टेक more than 200 or maybe 300 years if at all India can ever catch up to China, which is not going to happen. And in that period, a lot is going to happen here. How do you know what's going to happen in India? So, gentlemen, it's there, and I'm talking of the election and the prospects and क्या होने वाला आगे. But I have a lot of hope that Mr. Narendra Modi is going to do something very big, and that we will have to see and what done. This particular video is basically on the Indian scenario, which is at the moment pretty bleak politically, because there is no meeting ground between the opposition and the BJP. Secondly, the BJP must also get out of its obsession of the cow. Now the cow, if you go through the ancient Veds, also talks of sacrifice of the cow. Well, I don't say you should eat cow or you don't eat cow or something like that. But the question remains, if you can save the cow, why is the buffalo not being saved? Buffalo also gives milk. And buffalo milk is also very healthy, and yet we are permitting the slaughter of buffalo and the meat being sold abroad. I had been to Abu Dhabi and I found that Indian buffalo meat is available, exported from India. So, gentlemen, my point is that we cannot regulate the eating habits of the people, and India has to change its eating habits from vegetarianism to a more healthy diet. और ये एक प्रायोरिटी होनी चाहिए गवर्नमेंट की. मैं एक एग्जांपल बताता हूँ आपको. एक स्मिथसोनियन इंस्टीट्यूट में एक रिसर्च हुई थी. उस रिसर्च में 3 वाइट रैट्स लिए गए थे. One of the rats was given minced meat, the other was given milk,
and the third was given some vegetarian stuff, And it was found that the rat which had been given minced meat was the most aggressive, and बाकी दोनों चूहों को मार देता था. He used to hit them. So meat eating is a sign of aggressiveness. अगर आप आलू गोभी खाते रहेंगे, you will not be able to produce world beaters, whether in athletics or anything. और एक शेम है कि हम 1400 मिलियन के नेशन एक गोल्ड मेडल रो पिट के जीतते हैं और उसके लिए हम तालियां मारते रहते हैं. That is because the health of the nation is not good, and this is where Modi has to change the thing. He is a vegetarian, good enough, that's no problem. And my point is only that one should have the freedom to eat, and at the same time, the stress should be for the athletics and all. If you are to compete with the world, you have to have more protein. See, our children are having stunted growth, and there's such a lot of problem there. And our women, 51% of them are anemic. I mean, is that a thing? And 35 to 40% of the people below the poverty line. China ने कैसे अपनी poverty eradicate की है? That we must study that, and if required, we have to change the constitution. We will change it, because this constitution I don't think is that potent, and it's not a type of constitution that will lead you forward. जो अम्बेडकर थे, नेहरू थे, they were all अंग्रेज़ों के टट्टू थे या क्या कुछ भी कह लीजिए. दे कॉपीड वही जो कॉन्स्टिट्यूशन इंग्लैंड की और इंडिया में लगा दी. जब इंडिया नेवर डेमोक्रेसी ऑफ दैट टाइप, वेस्ट मिनिस्टर गवर्नमेंट. हमारे पास ऑलवेज ऑटोक्रेसी थी, जैसे हमारे बड़े बड़े बादशाह थे, राजा थे, कॉन्करर थे, कनिष्क थे, चंद्रगुप्त थे, विक्रमादित्य से. दे वर नॉट डेमोक्रेट्स. एंड इंग्लैंड में तो मागना कार्टा आ गया था इन द आई थिंक 16th or 17th सेंचुरी, एंड द किंग्स पावर्स आर टेकन अवे. पर इंडिया में ऐसा कुछ नहीं हुआ, बिकॉज फिर मुगल राज था, and after the Mughal Raj came the British Raj, which was again very autocratic. Mughals are also autocratic, but Mughals also divided the society. So we have to see everything in that perspective, And India has to move forward. There has to be integration. You cannot talk of... you see, a lot of Christians got alienated the day the BJP came to power. And the very first time, Christmas, that is 25th December, is the holiest day for the Christians, and on that day Modi announced that it is Good Governance Day. I mean, you can do it. I would say it's not a slight on Christianity, but such a big festival should not be clubbed with an obscure item like Good Governance Day or something like that. But we have to get out of that syndrome, because if India has to survive, we have to move. Everybody has to move forward. You have to do away with language, you have to do away with the religion, and you have to have a uniform law for everybody. You can't say that the Muslims can have 4 wives, and though I know that most of the Muslims don't have any 4 wives, they keep only 1 wife, but that's not the point. The point is that provision has to be removed. Similarly, the property law, you can't have a Hindu undivided family law and all that thing, and there has to be one law for everybody if India has to proceed forward. Well, and then the Modi is going to get a golden chance this time. I'm sure he's going to come with a very big majority, and though he will not win in the south, maybe he may win in Karnataka, but his chance of winning in at least 4 other states like Telangana, Andhra, Tamil Nadu and Kerala, I have no hesitation in saying, is almost close to 0. Other than a few seats in Karnataka, he won't win anything. But he's going to have very big margins in the Hindi states that will propel him to power. So gentlemen, one man जो आगे मेरे हिसाब से आगे निकलने वाला है, he is आदित्यनाथ योगी. आज मेरी बात मानिए और गौर से लिख के रख लीजिए. मोदी जी जाएंगे साल 2 साल में, आई एम श्योर अबाउट इट. ही विल कीप पेव द वे. वो चाहेंगे कि अमित शाह बने उनकी जगह, बट ही इज नॉट हैविंग द कैलिबर, नीदर द कैपेसिटी to be the leader of such a big nation, and the only man who looks likely to come up is Yogi Adityanath. So gentlemen, ये बहुत छोटा सा लंबा वीडियो है जिससे मैंने काफ़ी बातें की न्यू ईयर की, इंडिया के बारे में. I will make another video about what is happening in the world affairs, particularly about Pakistan and America. And जहाँ तक हमारा सवाल है इंडिया का, India has to pull up
itself up by its bootstraps. एंड मिलिट्री पावर का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है. नेहरू ने बहुत बड़ी गलती कर दी थी when he neglected military power. Modi is also not following the right track as far as military power is concerned. ये जो अग्निपथ स्कीम है इसको कोल्ड स्टोरेज में डाल देना चाहिए and we should forget about it, and at the same time we have to build up more potency, and we are now the biggest arms importer in the world. ये कोई बहादुरी नहीं है. और एक हिस्टोरिकल फैक्ट याद रखिए कि no country in the world can sustain itself as a superpower if it's importing all the weapons. And whatever weapons you are supposed to be doing, making here, which you say is Atmanirbhar and all that, उनका कोई मतलब नहीं है, बिकॉज उनमें पार्ट्स वगैरह सारे 90% जो है या मेजर जो कंपोनेंट्स हैं वो इम्पोर्टेड हैं. आई विल नॉट गो इनटू द डिटेल्स ऑफ दैट, पर ये फैक्ट बात है. जेंटलमैन, मैं बंद करता हूँ. न्यू ईयर है, ये बहुत अच्छा टाइम निकला है, एंड आई होप दिस ईयर डजंट बिकम डिज़ास्टर शुरू हो गया है. देयर इज़ बीन एन अर्थक्वेक इन जापान. लड़ाई चल रही है धमासम गाज़ा में. पाकिस्तान बैंकरप्ट है. वी डोंट नो व्हाट्स गोइंग टू हैपन. और गुड बाय एंड गॉड ब्लेस ऑल ऑफ यू. मैं, आप जानते हो, एक सीनियर एयरफोर्स के अफसर हूँ. मेरा नाम है MG सिंह, एंड आई like to make these videos with pleasure. And in case you like my channel, please subscribe to it, share it with your friends, and I'll be very happy about it. I close now and say goodbye and God bless.